हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, ये जीरो है, ये आप प्रूव कर सकते हैं, मैंने कल किया भी है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट देखिए दो डेल ऑपरेटर एक ही डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में, डेल डेल टी, टी इज स्केलर एंड ए इज vector in this relation. Okay, now you see we have, Sir, will you please repeat, sir? it gives you del square t, यहाँ पे del into divergence of a is not equal to del square a. You have to remember it properly because the operations are not same. So this is actually divergence of a gradient and this is actually gradient of a divergence. The operation order is different, that's why this is not same as this one. This is not, this relation is not frequently used in whatever physics or mechanics. लेकिन लास्ट रिलेशन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन डाइवर्जेंस ऑफ सॉरी ग्रेडियंट क्या है ये कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, सॉरी कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0, ये तो नहीं होगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ग्रेडियंट होगा, ये स्केलर हो जाएगा ना डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी विल गिव यू 0, ये हम लोगों ने प्रूव किया है, प्रूव कर सकते हैं, एंड del cross a will give you this one. Okay, this you can prove by using vector triple product formula. आप यहाँ पे a equal to delta ले लीजिए और c equal to a ले लीजिए, you will arrive this equation. So this Sir, is fourth point is not clear, sir. क्या बोल रहे हो? Fourth point, sir, not clear, sir. फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज a scalar quantity, it's not a vector quantity. Okay, so the only choice of fourth point is, okay, और ये तो मैंने सेम लिख दिया, ये दोनों सेम ही है, ये भी ग्रेडियंट है, तो ये मतलब है आपका ये ग्रेड फाई. ओके, it is equal to 0. This is the third relation. Okay, fourth relation maybe I have to check. Fourth relation. Oh, divergence of a car length. ये गलत लिखा. Divergence of car length. Because curl of A is a vector quantity, so only you can have divergence. It becomes 0. Okay, अभी clear है? Yes, sir. Sir, please repeat. Last one, sir. ये डेल क्रॉस ए, ये आपको देता है डेल इनटू डाइवर्जेंस ऑफ ए इनटू डेल स्क्वायर ए. ओके, सो नाउ यू कैन प्रूव दिस रिलेशन बाय यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. नाउ इफ यू टेक a इक्वल टू डेल, b इक्वल टू डेल एंड c इक्वल टू a, you will get this relation. Okay, देखिए डेल डॉट a into del a, del square a. ठीक है? So now Yes, next we have actually क्या है, integral. This is all about the differentiation of vector quantity, and now the next thing is how can you integrate a vector quantity through a vector calculus. Okay. So next topic is integration of a vector. Up to now we were discussing. Sir, don't rub the last line. Okay, so
del cross del equal to this one. Okay, and you can prove this relation by using the vector triple product formula. ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने जस्ट रिकैपिचुलेट कर दिया, कुछ कंफ्यूजन था इसलिए. So now let's start a new topic. Vector इंटीग्रेशन. ये हम लोग को, आप लोग जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, that is actually integration of a scalar quantity. Okay, it may be line integral, it may be surface or volume, but here we will discuss. Okay, line surface is there, but the integrable quantity, the integrand, is not a scalar quantity, it's a vector quantity. Okay, let's start first. So we have three: a line integral, and then surface integral, and क्या बोलते हैं volume. These are the three things. तो आप क्लास में जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो स्केलर क्वांटिटी का ये तीनों इंटीग्रल आप लोग पढ़ रहे हैं. So now let's start first the line integration of vector function. Vector दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा छोटा लिखा है. हेलो. Yes. Yes, sir. ये 65 लोग में से मैं थोड़ा एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ, है कौन? विशेष लाल हो बाबू? Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड. सुधा मुनि बर्मन, सुधा मुनि हो क्या ना? सुधा मुनि ना, सुधा मुनि आउट, देखो नहीं है. वेरी गुड. सुधा मुनि नहीं है ना? ओके. रॉबर्ट हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके. प्रतीक प्रामाणिक. Yes, sir. ओके. मोहम्मद अहमद. Yes, sir. मिस्टर लोकेश हो क्या? देखो सब बेवकूफ बना रहा है, किसे बना रहा है पता नहीं. ओके, वेरी गुड. सर ये किस चीज का मतलब हो रहा है? मैं रैंडमली देख रहा हूँ. यस सर, आया हुआ था वो कमेंट होके. अगर कोई, अरे मेरे घर में भी बच्चे हैं, वो देखता हो क्या करते हैं ऑनलाइन क्लास के साथ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. सर वो फंक्शन लिखे हैं लास्ट में कि फॉर्मूला? फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, line integration of a vector function. So let's take A is a vector function, okay, which is a function of coordinate, obviously x, y, z in 3 dimension. So that means you can write this one as, let's say, ax I, ay j, az k. So ax, ay, az are the components of the vector along in 3 different directions, where ax, ay, and az, the 3 components are actually function of x, y, z. Okay, and now if you want to integrate something, so what you have to do, you need to have for line integral. ये मैं सीधा बता रहा हूँ, इसका अंदर में उतना ज्यादा नहीं बता रहा हूँ. If you want to perform a line integral, so you have to take a line, okay, and then
in each point you have to divide the line in infinite or n number of division like this, okay, with equal length, and each distance, this we can say it is dl. It's a vector quantity. So now, although the dl has same separation in each segment, but their direction is changing in each point. So now, what we have to do? So we have to make the dot product of dl and a in each point. Then you do the summation. Okay, and summation is actually is analogous to the integration. Okay, summation works for discrete parameter, discrete variables. Where if you deals with continuous variable, the summation will transform to integration. That means what? Okay, this is, we call it infinitesimal, very small, infinitesimal distance or displacement vector or distance. Let's say distance or length. Infinitesimal length. Okay. So now what we usually do? So let's take a coordinate system. Maybe this one. Okay. Let's say this is z, and this is y, and this is x. Okay. So these are the three coordinate systems, and let's say we have a line. We need, if you want to carry out a line integration, you need a vector and you need a line, obviously. So we have to carry out the vector integration of this vector function along the line, let's say a to b. Okay. So then what you have to do for each point, let's say this is a1 point, this is a2 point, this is a3 point, this is a4 point, dot, let's say an point. So that means we divided the whole range A to B with n minus 1 number of divisions. Okay, and then what, in each point you have to calculate the dot product of this quantity. Okay, and then you do the summation of dl. Okay, this quantity for each point from A1 to AN. So this will give you line total. And if I want to deal with continuous variable, so if I take n tends to infinity, then what will happen? This will become a integration. So A1 x equal to, let's say, A to B, and this will become an integration. A dot. On there, मैं क्या कह रहा हूँ? How line integral we can calculate it. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Suppose if I want to calculate a line integration of a vector quantity, so you need a vector function A and you need a line. Let's say the line is maybe spaded over the space from A to B. Okay. So first job, what you have to do, we have to slice the whole line in a number of points. Okay. So the distance between two consecutive points will be dl. इसको हम लोग बोलते हैं infinitesimal length. It's a vector quantity. So now for each point, you have to calculate the dot product of this quantity, a dot dl. So इसके लिए a dot dl, इसके लिए a dot dl, इसके लिए a dot dl, सब a dot dl मैंने calculate करके उनको मैं summation कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, a1 से an तक. So that will give you the total value of this dot product along the line. Okay, so now if I take the limit n tends to infinity, then n dl will be, then what if I put n tends to infinity, then dl will be tends to 0. Okay, then this summation will transform to integration like this, a to b a dot dl. Integration is nothing but a summation for a continuous variable.
So continuous variable कौन दे रहा है? This condition will give you continuous variable, or this is due to discrete variable. Why am I saying discrete variable? Because n is finite here. You divided this whole length with a finite number of points, and here we divided the whole length with infinite number of points. So that's why it's become continuous variable. समझ में आया? What is the basic about line integral? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So now, if I say A equal to B, so that means the path is closed. So if I say if A equal to B, so that means the path is closed. A equal to B हो रहा है ना, मतलब path closed हो गया. Okay. So now you can write this integration for a closed path. So line integral में L equal to क्या मिला आपको? For a line L, okay, let's say the line is this line is say it is L, okay? No. Let's say L. This line is L. So over L, we have to integrate A dot dl. So this is called line integral, okay? It's a vector line integration. So L, you can put the L equal to A to L equal to B. I'm not saying that this is X or this is Y, okay? It depends on the patch. The value of the patch at A equal to A1 point and value equal to of the patch at A equal to N point. Okay? So this is actually we call line integral of, इसको हम लोग बोलते हैं line integral of, ये समझ में आया? इसको बोलते हैं line integral of A along the line L bounded by A to B. हमने फिजिकली लाइन इंटीग्रल क्या देता है? अभी एक फिजिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे वर्क डन, ओके, वो हम लोग दे सकते हैं. नाउ इफ आई से if A equal to B, so this will give you closed path. Closed line को closed path बोलते हैं. So in that case, the line integral will write instead of A to B, it's open. It's bounded obviously by two limits. If the two limit is same, initial and final, so it will become a closed path, and we use this kind of symbol to describe the line integral about a closed path by using a contour circle. Yeah, देखा है ना पहले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For closed path, and this is for open. Open means in the sense it is obviously bounded, but lower and upper bound is value of the lower and upper bound are not same. Okay. So now let us. Why I am very much interested in path, closed path. Okay. So there is a definition called if the line integral, okay, over a closed path of a vector A dot dl is 0, then we say that A is conservative vector function. ये हम लोग जानते हैं, ये फिजिक्स में चला गया, but it is while to mention it. So that means what is the mean? What is the mean? Meaning because A, B is, so whatever may be the, so A to B, so that means suppose if I have a path A to B, so if I want to make it same, that means if you go this and come back again, okay,
तो ये काफी सारे पाथ हो सकता है, जैसे ये आप इधर से गए, आए, इधर से गए, इधर से आए, लाइक दिस. ओके, so that means it doesn't depend on the path. It depends only to the end points. That is why we call it conservative. That means it's independent of path. Okay, independent of path, only depends on the initial and final position or limit. Position मैं बताऊंगा, final limit. If we are dealing with walk down, then we will see that it will become a position. Okay, so let's take an example of walk down. It's a very famous one. The example of line integration, line vector integration is walk down. Okay, so let's say मतलब suppose आपके एक line है, okay, let's say A to B, okay, and you have a suppose some particle which suppose you have applied a force A, okay, and now we want to calculate what is the work done to push this particle from A to B. Okay, so then what in this method what we have to do? First we have F dot dl. Yes, so you have to slice it, okay, and then you calculate F dot dl for each point, and then you sum over all the legs, all the dl. Okay, so then all the legs. So if I want to say A to B, so this will give you. तो इसको हम लोग dl नहीं बोलेंगे, तब ये बन जाएगा displacement. Okay, so it will give you work done. ये फेमस एग्जांपल है और वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन इज वर्क डन. ओके, सो इफ हम लोग जानते हैं if you ignore friction, okay, then if we know that, so if I A से B गया, B से A आया, in that case for a contour integral f dot ds is 0, then we say f is conservative, if force is conservative. ये हम लोग पढ़े हैं प्लास्टिक में, वर्क डन कैलकुलेट किए और दिखाया है फॉर ए क्लोज पाथ द वर्क डन इज 0. दैट मींस देयर इज नो डिसिपेसिव फोर्स. Dissipative force means something you cannot recover, like friction. Okay, so if you ignore friction in this process, then the force applied to the mass M will become a conservative force. Okay, समझ में आया? Yes sir. हाँ बोलिए. Okay, Yes, sir. so now let's take an example to calculate the line integral. That will clear up your all confusion. Whatever I said, I will discuss through a problem. Okay, so okay, let's draw a path in 2 dimensions. Line integration में 3 dimension जरूरत नहीं है, because line can be well expressed in 2-dimensional coordinate. So let's say this is x, let's say this is y, and let's say this is the line which is going through each one. So let's say this is 1, so this is 2, let's say this is 1, let's say this is 2. Okay, so now what I'm trying to say, let's say this is the path. Okay, this is the path. Let's say we are pushing a particle from A to B. Okay, I don't know in which path. Let's say we define 2 paths. One is directly through this line. You push the particle from A to B, from here to here, but through this line. So we will get a line integral along this line. Okay, so now there is another path. Let's say you push the particle here first,
and then you push the particle here. So there are two paths by which you can push the particle from A to B. Let's say from the path 1. Let's say this one the path 1, and this is the path 2. Path 1, path 2, path 1. Okay. तो दो पाथ में, तो पाथ 1 में कैसे वो ऐसे जाएगा और पाथ 1 में सीधा सीधा चला जाएगा. Okay. So now we need to, so now we got the line we describe the line to this picture. So now we need a function, vector function, and which will that will give you the vector integration. So let's say the vector function A is, it will be a function of xyz, as I mentioned to you already. So let's say the function is y square I plus 2x into y plus 1 into z. So it is in 2 dimensions, so z is 0, so you don't have to, so z is along this direction, so everything is happening in xy plane, so z is 0. Z is 0. Okay. So now this is your, and we have to calculate the line integral of A, okay, from along the path, दो पाथ में कैलकुलेट करेंगे, path 1 and 2 from A to B. This is the problem. And check, उसके बाद और भी देख सकते हैं, check whether A is conservative or not. So these are the two things we can calculate it. So let's first talk about the path along 1 or 2. One path जो है, you can divide the path in 2 segments, this one and this one. So let's say this is 1 and this is 2. That means path 1, you can split this path 1, 2. Okay. So first we will calculate the work done. अगर ये force है, so first we will calculate. ये मैं साफ कर देता हूँ, लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. First we will calculate the work done. अगर ये force है, अगर ये line integral है, तो simply line integral बोलिए. So first we will calculate the work done. line integral लिखते हैं, integral along path 1. So path 1, you can divide the path 1 in 2 portions, 1 plus 2. First we will calculate for 1. Okay, let's see. अच्छा बताइए हमको क्या कैलकुलेट करना है? We have to calculate. मैं इसको कह रहा हूं, suppose this point is, let's say A, नहीं तो मैंने लिख दिया, B, C, D, है कि नहीं? So that means we have to calculate B to C for this one only, this path only. So A dot D. हम लोग को ये कैलकुलेट करना है. Okay, so let us first find out what is the value of dl. So dl normally in 3 dimensions you can write I dx plus j dy a d. Okay, so normally we can write the infinitesimal element in 3 dimensions like this. So now since we are dealing with
only xy plane, so dz will be 0, no problem in that. Okay, in each cases. Now if I move from b to c, so z is constant. If I move from b to c, z or y is not changing, so that means dy is also 0. So along bc तो है ना, y equal to constant, so that means dy is also 0. So that means your dl become I dx. इतना करने की जरूरत नहीं था, since along x direction the dl will be dx, that's all. और कोई चेंज नहीं होता, ये पैरेलल फेज डायरेक्शन है ना. तो सिमिलरली a तो आपको पता है, और वैल्यू क्या है आज से बताइए, y का वैल्यू क्या है bc में, y का जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है 1 सो नाउ आपका a फंक्शन में पूरा इंटीग्रेशन जो है, ये तो x y दोनों ही है ना, हमने साफ कर दिया. a था आपका क्या था, ये सर x कांस्टेंट नहीं है. x कैसे कांस्टेंट होगा, x तो मूव कर रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, इस रीजन में 1 से 2 नहीं जा रहा है, x कैसे कांस्टेंट है. यस सर, x नहीं मतलब y कांस्टेंट. सो 2x प्लस y प्लस, मैं स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे कीजिए. तो ये आपका वेक्टर है, तो ये y इक्वल टू 1 हो गया ना, तो इसको मैं इधर पुट कर दूंगा. सो अलोंग सर थोड़ा बड़ा लिखिए. BC दिख रहा है, दिख रहा है. यस सर. Along BC यस सर. a इक्वल टू कितना होगा बताइए, तो y का वैल्यू आपका 1 है ना, तो इट विल बिकम जस्ट I है ना, ये तो कितना है, ये 1 है, तो I कैप होगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 होगा, तो 4x into j. Now we know both the things. dl equal to है और a कितना है, so a dot dl equal to कितना होगा, 1 आ जाएगा सर. यस नहीं 1 नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हैं, I dx होगा, है कि नहीं. यस सर, dx होगा. Now we can calculate the integral, this one. Okay, let's do it. अच्छा बताइए, सो हम लोग को यही इंटीग्रल लेना है ना, यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग. तो इंटीग्रेशन b to c a dot dl now became कितना हुआ, b में अभी तो पूरा इंटीग्रेशन ही आपका पाला बदल गया, तो आपका बस dx हो गया. तो x वेरिएबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट b एंड x एट c, तो ये कितना होगा 1. now for second में देखिए पूरा उल्टा है, it is actually moving parallel to the y axis, very simple. तो dl इक्वल टू आपका हो जाएगा जैसे x के लिए किया था dy into j, है कि नहीं, parallel to the y axis. यस सर. पैरेलल टू द x एक्सिस था I dx था, पैरेलल टू ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो dl इक्वल टू dy into j, मतलब dx 0, dz तो 0 ही है, y dx 0 because x is constant here. x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2. और now we can also similar way calculate what is the value of a along CD. So value of A along और CD कितना होगा बताइए, वो मैंने फिर से साफ कर दिया. A का वैल्यू कितना था बताइए, y स्क्वायर j था प्लस क्या था ये 2xy plus 1k. 2x into y plus 1 into j. तो बताइए A का वैल्यू कितना होगा फिर
if I put the y value square I cap y y square square I और ये जो भी है ये तो 4 into y plus 1 ये कितना होगा 4 into y plus 1 4 into y plus 1 into j। तो a डॉट dl कितना होगा तो a डॉट dl मैं इंटीग्रेशन ही कैलकुलेट कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन c to d a डॉट dl कितना होगा बताइए बस यही बचेगा ना 4y plus 1 into dy. तो y plus 1 into dy अच्छा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट c ये 1 है 1 1 1 ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना देगा कैलकुलेट कीजिए तो मैं तो किया था कल रात को ये 10 आया है 10 Yes, sir. 10, sir. so now what is the total work done along path 1 so total 11. 11 वर्क डन नहीं बोलूंगा ये फोर्स होगा तो वर्क डन होगा लाइन इंटीग्रल along path 1 is equals to कितना है 10 plus 1 equal to and now we will calculate the work done sorry path integral along the path 2 ठीक है फिर देखेंगे टोटल जीरो हो रहा है कि नहीं तो ऐसे गया और ऐसे आया ठीक है so now we'll calculate the path integral line integral or path integral whatever so path or line integral मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है बट आई थिंक यू कैन मैनेज अच्छा along path 2 कैलकुलेट करें ठीक है अच्छा यहाँ पे बताइए यहाँ पे दोनों ही चेंज हो रहा है एक यस सर y भी चेंज हो रहा है तो dl इक्वल टू कितना होगा बताइए दोनों को दोनों ही चेंज हो रहा है तो दोनों ही लेना पड़ेगा dz तो 0 है बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम इन xy प्लेन तो नाउ यहाँ पे मुझे एक्चुअली मेरा अब जो लाइन इंटीग्रल जो भी करेंगे 3 डायमेंशन योर इंटेंशन विल बी टू रिड्यूस द 2 डायमेंशनल इंटीग्रल मतलब जहाँ पे dx dy है किसी एक वेरिएबल में ले आइए या तो dx में ले आइए या तो dy में तो जैसे वहां पे मैं कांस्टेंट पुट कर रहा था x का वैल्यू y का वैल्यू तो उसमें क्या हो रहा था इट ट्रांसफॉर्म द होल इंटीग्रेंट इन दैट एज अ फंक्शन ऑफ x और एज अ फंक्शन ऑफ y so here also we have to do it by using some relation if you see this curve this line it is actually देखिए 1 1 2 2 मतलब 45 डिग्री एंगल में जा रहा है इसका मतलब क्या है दिस लाइन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन से बात कर रहा y is equals to m y is equals to x yes that if I use this the equation of AB is y equal to x तो ये ही मैं पुट कर दूंगा a के लिए तो अब बताइए तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है dx equal to dy also है कि नहीं दोनों का सेम है तो your ultimately dl become कितना होगा I plus j into dx ठीक है so now we will calculate oh god we'll calculate तो ये मिला आपको dl सर कैसे कैसे लिखे dl I plus j dx अरे बाबा dx इक्वल टू dy हो गया ना मैं इसको इधर पुट करूंगा तो क्या होगा ठीक है सर समझ गया so a will become a का वैल्यू क्या था अगेन
y स्क्वायर I प्लस क्या था ये y क्या था ये 2x into y plus 1 into j। अच्छा बताइए a डॉट j निकाल ले, a डॉट dl निकाल ले, कितना होगा a डॉट dl बताइए। तो ये y स्क्वायर dx होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये j में कितना होगा? सिंपली 2xy plus 1 into dy। So what I will do? dx। ओके तो मैं अभी किसी को चेंज कर दूंगा y और x को। आप y को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं। So x square dx, you can write this one if I put y equal to x here, so ये आपका बन जाएगा 2x into x plus 1 into dx। तो आपका a dot dl बन जाएगा, कितना बनेगा बताइए। तो यहाँ पे 3x square plus 2x dx. 3x square plus 2x dx. तो नाउ जो अभी आपका काम बहुत सिंपल हो गया। सो यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन नाउ। So integration along b to d a dot dl। अच्छा बताइए b का वैल्यू यहाँ पे x, b में x का वैल्यू क्या है? 1 है। सर 11 आ रहा आंसर। क्या 11 11 11 आ रहा है? फाइनल। यस सर, फाइनल आंसर 11। Sir, 10 आ रहा है sir. है? यस सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है sir. अच्छा 10 आ रहा है। 10 sir। 10 आ रहा है सर 10। अच्छा जो भी है उससे कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 2x मास dx इक्वल टू ये कितना होगा? 10 ही होगा, क्योंकि आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर आज का इंटीग्रेशन करने से x cube plus x square आ जाएगा sir. हाँ x क्यूब। सो नाउ दिस इज द टोटल वर्क डन कितना। तो इस पार्ट में पार्ट 1 में वर्क डन कितना है? लेट्स से w1 इक्वल टू कितना आया? 11। पार्ट 2 में w2 कितना आया? 10। अच्छा बताइए अगर मैं क्लोज पाथ लूंगा, क्लोज पाथ मतलब क्या है? क्लोज मतलब ओ Line integral 0. कैसे आएगा? लाइन इंटीग्रल 0 तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लोज पाथ मतलब है आप B से C गया, C से D गया और D से A आया, तो जहां से शुरू किया वहीं से वापस आया, तभी जाके आपका अपर और लोअर लिमिट सेम होगा। मतलब ऐसा है। तो B C D आप ऐसे गए क्लोज पाथ। ओके तो नाउ ये इंटीग्रेशन जो है आप अगर क्लोज पाथ के लिए कैलकुलेट करेंगे a डॉट dl, ये जो पाथ है ये क्लोज पाथ क्या है? b c d d इनके लिए तो कितना होगा? अच्छा देखिए ये हम लोग इस डायरेक्शन में कैलकुलेट किए थे तो प्लस आया था, तो मैंने उल्टा डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, तो ये माइनस होगा। तो 11 तो ये तो सेम डायरेक्शन में ये है जिसमें -10, which is 1. This is the net work done over a closed path. It is not equal to 0, so that means a vector is not a conservative foot. It entirely depends on the function of the vector. It doesn't depend on the path. So whether the vector is conservative or not, it entirely depend on the functional property of the vector. Okay? So that's all for line integral. Now we can go for surface integral. तो करते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये चौक कहाँ गया? वेरी गुड। तो नाउ लाइन इंटीग्रल खत्म हो गया।
we will go for surface integral. ये देखिए ये मैथमेटिक्स ही है, पर इसमें थोड़ा फिजिक्स का टच है, बिकॉज लाइन इंटीग्रल formalism जो है just a normal surface integral, but the integrand is not a scalar quantity, it's a vector quantity like force. So now let's go for surface integral. Surface integral of vector function. Function will be same. So we have a vector which is a function of x, y, z. It is a vector quantity, okay? And we can write this one is actually whatever, maybe ax I cap, ay j cap, and az. That means ax, ay, az, the three components in this vector is actually the function of x, y, z all. So since we are dealing with surface integral, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ यस, so since it is a surface integral, so here surface only can be described in 3 dimension. अगर आपको एक फ्री सरफेस बताना है तो you need to have a 3 dimension, okay? जैसे बैलून का सरफेस आपको डिफाइन करना है, आप 2 dimension में डिफाइन नहीं कर सकते. So let's say in a 3 dimension, this is the coordinate. मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको बस फील देना चाहता हूँ how surface looks like. Let's say this is a free surface like this. Let's say like ये आपका जो फीता है ना, फीता क्या कहते हैं, जो पहनते हैं लड़की लोग बालों में, वो strip is something like that. It is free surface which is described in 3 dimension. So now, so जैसे लाइन इंटीग्रल में हम लोग क्या किए थे, we divided all the length, the whole length with infinitesimal point, segment, जिसको हम लोग बोल रहे थे infinitesimal length. और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, you have to divide the whole surface with a infinite number of patches. Patches मतलब क्या है, so you have to just divide it, all the patches, a number of patches. मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, something like that. ठीक है? So now, so at some point, let's say this one. So we have a patch here. This is the patch, and we say the area of the patch is ds. इसको हम लोग बोलते हैं infinitesimal surface area. जैसे dl जो था, dl इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये है, मतलब उस पॉइंट में ये लेंथ का जो डायरेक्शन है वही dl का डायरेक्शन. तो सरफेस का डायरेक्शन क्या है, ds का डायरेक्शन क्या है, it is actually is perpendicular to the surface at that particular point. So there are 2 options. It could be normal outward like this or inward like this. Okay, normally we take radially outward, we don't take radially inward as a surface direction. That means if I describe ds is a vector quantity, so then ds, this is the
value, and this is n cap, where n cap is unit vector of surface at that particular point जहां पे मैं ds लिया है, okay, at that particular point. So see, in each point n is changing. आपको यहाँ पे लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका dl का डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट है, सिमिलरली ds का भी जो यूनिट वेक्टर है it will be different in different direction. Okay, so that means ds the crux is actually it's a vector quantity. It's not a scalar quantity. Then everything is same as your line integral. So that means you have to just take the surface integral is surface integral. In similar way, what you have to do, we have to calculate for each point. So for, let's say, for this point, you have to calculate a dot, let's say, dsi. Okay, at this, so I am saying that this is the ith point. Okay, ith point. So now what you have to do, you have to, if I want to calculate the total surface integral, you have to take n I equal to 1 to n. Okay, so this is, now if I put n tends to infinity, so that means ds will tends to 0. So this will convert this one as a integration a dot ds, okay, on the whole surface. Whole surface means the whole surface. Let's say this is the whole surface. This is the whole surface. So for closed surface, you can do this a dot like balloon. So you can use this. Surface. So what have you written about the limits in the summation part, first line? ये मैंने Yes, एक आयत जैसे मैंने ये पे n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मैंने एक ऐसा एक पॉइंट लिया I जहां पे जो इनफाइनिटेसिमल सरफेस है dsi, उसके साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला और फॉर ईच पॉइंट मैंने ऐसे कैलकुलेट किया ये डॉट प्रोडक्ट को, फिर उसको समेशन किया. ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर डिस्क्रीट द टोटल सरफेस इंटीग्रल फॉर दिस. So what is the limit? Limit is I equal to 1 to n. Okay. For discrete variable. Discrete variable means जैसे वहाँ पे बताया था n equal to finite. Now for continuous variable you have to make n tends to infinity, that means ds tends to 0, and this summation will convert into integration. जैसे मैंने बताया था line integral के लिए, so then we have to do the integration a dot ds for closed surface like balloon. So we have to use this one. This. सर वहाँ डबल इंटीग्रल का क्या मतलब है? डबल मतलब है ये ds जो है ये डबल इंटीग्रल, इसका दो वेरिएबल है, मतलब dx dy और dz dy जैसे भी है, मतलब दो बार it will run over two infinitesimal element. जैसे मैंने यहाँ पे let's say यहाँ पे let's say मैं कह रहा हूँ कि ये आपका x डायरेक्शन है और ये सपोज y डायरेक्शन है, तो ds इक्वल टू कितना होगा dx into dy. Okay, so it will run, so you have to perform the integration 2 times, that's why it is low integration. So then what are the limits? Limit depends on the nature of the surface, how it is bounded. x y z कैसे बाउंड है उसका उस तरह से आएगा. ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चलेगा. So now what is the analogous quantity in case of physics? जैसे मैंने लाइन इंटीग्रल में बताया था क्या बोलते हैं लॉकडाउन. Okay, so let's take a real example where surface integral is actually it can be understandable properly. ठीक है,
So now let's take a vector quantity v, okay, which is a function of, let's say, x, y, z, and let's say it is a flow vector. Flow, water flow, gas flow, water flow vector. So what is flow vector? By definition, flow is, what is the definition of flow? Flow is mass. Let's say if I say that mass is flowing, energy can also flow. Mass, let's say for mass, flow across unit area per unit time. Okay? So now what the surface integral, if I calculate a, suppose if you have a surface integral, let's say v, let's say we have a surface and we are calculating this integral over the surface S. Okay, what physical quantity it will give? Actually आप याद रखिए v into a मतलब क्या है? आप पार एरिया को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So that means it will give you mass flow total mass flow per unit time. So area, total area में चला जाएगा. So it will give you, so this को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं flux. So this is the physical quantity. Line integral means if v is a flow vector and if you perform the surface integral over a surface S, this will give you flux. So flow to flux. Yes. So what is the meaning of that? So let's say we have a surface like this, okay, and I will draw it properly. So let's say this is a surface, okay, and a flow is happening like this. Okay, this is the flow vector, let's say V. And so in this point, this is the perpendicular direction of the surface N. Okay, and let's say this is the patch at this point ds. So that means ds equal to ds into n cap. Okay, so now ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो v कैलकुलेट करेंगे. v मतलब है ये एरिया को ले लीजिएगा परपेंडिकुलरली, एक छोटा एक एरिया ले लीजिए 1 स्क्वायर बाय 1, इसके थ्रू में कितना मास जा रहा है उसी को फ्लो वेक्टर बोलते हैं. So now this will, the surface integration a dot m dot ds, this will give you actually a dot ds cos theta, है ना? This will give you what? The flux. ये पढ़ा होगा आपने क्लास 2 में, पढ़ा है ना? Let's say this angle is, पढ़ा है ना? डबल इंटीग्रेशन वाला क्लास 12 में नहीं था सर. हाँ, ये सरफेस लिया है ना, तो सरफेस ऐसे आएगा ना, सरफेस. सॉरी, ये मैंने क्लोज नहीं है, ओपन सरफेस. तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, तो सरफेस cos इंटीग्रल थीटा लिखे हैं, है, cos थीटा लिखे हैं, वो डबल ये इंटीग्रल. cos थीटा है. a डॉट n ds, a डॉट n का डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा, a cos थीटा, ds तो था ही, तो इसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं. So physically we call it flux. So now let us take an example and find out how to calculate flux over 6 faces of a cube. आपको मैंने ठीक से शायद ये वाला समझ नहीं आ रहा होगा. सपोज आपके पास एक पाइप है, ठीक है,
और पाइप को आपने ऐसे छेदन किया, ठीक है, अभी आपको याद आ रहा होगा। सो लेट्स से दिस इज योर v जो भी है, ठीक है, तो v का डायरेक्शन क्या होगा, और ये तो मैंने इसको तो आप ऐसे भी काट सकते हो, ये भी काट सकते हो, तब ये क्या होता v और n के सेम डायरेक्शन में होता, लेकिन मैंने ऐसे काटा तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये n का, तो दिस इज थीटा। अभी ये आपको समझ में आएगा। फॉर दिस डायरेक्शन थीटा इक्वल टू 0 and for this direction theta is not equal to 0। अभी समझ में आ रहा है? क्या बाबू? Sir, can you please explain once more? What this example, suppose if I take a pipe, okay, जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो मैं पाइप का जो एंड है, एक तो मैं परपेंडिकुलरली काट सकता हूँ ऐसे स्ट्रेट, और इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूँ, है कि नहीं? ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये देखिए, तो ये अगर स्ट्रेट होगा, इसका परपेंडिकुलर, ये सरफेस का डायरेक्शन किस तरफ है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ना। यस सर, और अगर आपका सरफेस ऐसे है तो इसका तो परपेंडिकुलर कौन सा? थीटा एंगल पर मुड़ जाएगा। ये होगा ना। तो यही दो सिचुएशन है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है और यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल, तो ये आपका ये v का भी डायरेक्शन था और ये आपका v का भी डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल, तो यही सिचुएशन है जो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Now take an example to do it. इसके बाद क्लास है क्या? मैथ का क्लास है सर, कितने बजे? 11:15। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देके छोड़ देता हूं, बट टू टेक टाइम। ओके सर। 5 minutes। सपोज आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, और ये क्यूब 3 डायमेंशन में है। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज y, and let's say this direction is x and this direction is, let's say it is z, ठीक है। सपोज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, फ्लो जैसे यहाँ पे वाटर, जैसे नदी में पानी जाता है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो ये क्यूब को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो नाउ तो पानी इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से जाएगा, उधर से निकलेगा, इधर से जाएगा, उधर से निकलेगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्यूब। आपका कितना सरफेस है? 6 सरफेस है, तो हर सरफेस में आपको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। लेट्स से दिस इज योर फ्लक्स v, okay, and so we have to calculate the surface integral of the vector function v for each surface, this one, this one, this one, this one, this one, then we will add all this up to find out the total flux coming out from the क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत काम करता है। तो लेट्स टेक दिस फंक्शन, द वेक्टर फंक्शन वी आर इंटरेस्टेड फॉर is 2x raised into I cap plus
x plus 2 into j cap plus y into z square minus 3 into j cap. तो अभी बताइए तो ये कितना सरफेस है? देखिए So what have you written over there? Y into y into z square minus 3. okay. तो हम लोग क्या करेंगे फॉर ईच सरफेस, जैसे अगर मैं जो फ्लो है इस फ्लो को मैं 3 हिस्सों में बांट दिया. दिस इज Vx, so this is Vy, and this is your sorry not this is your Vz. Okay, so now let's see what is the component along the y-x axis. तो मतलब क्या होगा, ये आपका क्यूब है. लेट्स थिंक अबाउट दिस टू सरफेस. ये जो बैक और ये वाला है, सामने वाला जो है, मतलब ये सरफेस और इसका पीछे वाला सरफेस जो है, तो Vx ये x कंपोनेंट है. तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये इधर से इन करेगा और इधर से आउट होगा, लाइक दैट. And now if I calculate the inward flux for the back surface and outward flux for the front surface, and their subtraction will give you how much net flux you will have. Okay. Similarly for Vy, so this component, so you take this surface and this surface. So you take inward flux for this surface, outward flux for this surface, and find out the net. You will get the total flux along the y direction. Similarly, you can find out in the z direction, and for x, y, z, you add them vectorically, you will get the total flux to the surface of the cube. ये situation थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इजी है बिकॉज़ इसका ज्योमेट्री कार्टेशियन. सपोज यहाँ पे बलून एंड आप इसमें बलून वाटर है और आपने कुछ होल बनाया एंड नाउ वाटर इज कमिंग आउट. सो ये फ्लो वेक्टर है. सो नाउ इफ आई वांट टू व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द बलून, देन यू हैव टू इंटीग्रेट. लेट्स से दिस इज द फ्लक्स वेक्टर, फ्लो वेक्टर. सो यू हैव टू इंटीग्रेट this one with the surface of the sphere instead of surface of 6 faces of the cube. तो यही हम लोग कल करेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है. Happy Thank you, Shivratri, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.